डिले वाउंड हीलिंग, यानी कि इसके इफेक्ट से डिले मीन जख्म जो रहेगी वो जल्दी नहीं भरेगी. ओके, तो दैट इज द डिले वाउंड हीलिंग. तो दिस इज अबाउट द जोना fasciculata. नाउ अबाउट द जोना रेटिकुलरिस, third layer of adrenal cortex, that is called as the zona reticularis. You know the about this zona reticularis, it is the layer, that is the layer of the particularly adrenal cortex. Okay, secrete कौन से हार्मोन secrete करता है, that is called as the sex corticoids. You know the about the sex corticoids hormone are their secretion. Okay, इसमें there are two types. One is that is the androgens, clear है, that is the androgens. And now second about the very important, that is the estrogen. Okay, androgen and estrogen, that is the androgen is the masculine, that is the masculinizing hormone, clear है, very important, masculinizing hormone. This is called as the particularly feminizing hormone. You know the about the very important, that is the feminizing hormone. Okay, that is the masculinizing hormone, and that is the feminizing hormone, very important. Also these two hormones secreted, that is the by the zona reticularis. Now एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हो, पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन है तो एस्ट्रोजन का डेवलपमेंट, और दैट इज द एस्ट्रोडाइल. ओके, ये क्या करेगा, डेवलप मेल कैरेक्टर एंड डेवलप फीमेल कैरेक्टर. तो अपन लिख सकते हैं इसको, दैट इज द डेवलप फीमेल कैरेक्टर, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टर, डेवलप, दैट इज द डेवलप मेल character, develop male characters and develop female character. Now this is very important about the hormones. Now sometimes secretion, that is the hyper secretion हुआ, that is the hyper secretion हुआ, तो obviously hyper secretion होने के बाद conditions कुछ तो भी आएगी, that is called as the precocious puberty, that is called as the precocious puberty. यानी कि precocious puberty है तो इसका मतलब जो भी child है it is developing into the adult soon. Okay, तो excess क्या हो जाएगा particularly इनके बीच में, that is the excess एंड्रोजन सिक्रेशन, क्लियर है, एंड्रोजन एक्सेस, एंड्रोजन इन मेल, क्लियर है, देन ऑल्सो एक्सेस, दैट इज द एक्सेस एस्ट्रोजन इन फीमेल. और प्रिकॉशियस प्यूबरिटी मैंने आपको बोला है कि हाइपर सिक्रेशन किसका हो रहा है, दैट इज द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का, दोनों में से किसी का भी होगा, in particularly male and female, called as the precocious puberty, that's mean child soon in the adult, यानी कि वो adult में जल्दी उसका development होगा. तो this is about the particularly zona reticularis and their hormone. Okay, now about the gonads. Origin is the mesodermal in origin. Okay, testes and ovaries. Okay, testes and ovaries, there are two gonads are the testes and ovary. Testis, that is the male gonad, that is the here seminiferous tubule होते हैं, क्लियर है, एंड लीडिंग सेल्स. ओके, सेम FSH पर्टिकुलरली FSH जब स्टिमुलेट होगा पर्टिकुलरली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वर्क करेंगे और पर्टिकुलरली ये मैच्योर होगा, क्लियर है, और इनिबिन, तो इसलिए वो फिर उसको क्या देंगे, दैट इज द मैच्योर होने के बाद उसको देंगे, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक देंगे वो. ओके, देन लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होने के बाद और इंटरस्टिशियल हार्मोन, ये इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक तरीके से मैचुरेशन और टेस्टोस्टेरोन बनेगा, और फिर इसका एक तरीके से इसका भी एक नेगेटिव फीडबैक जाता है अल्सो लीडिंग सेल्स को, यानी कि जब सिक्रेशन होना है तभी वो सिक्रेशंस होंगे, क्लियर है. पहले डेवलपमेंट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दैट इज दी फॉलिकल का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनका डेवलपमेंट, फिर उसको इनिबिन और देन पर्टिकुलरली उसका
इट गिव टू निगेटिव फीडबैक। एक एक्शंस देंगे, पहले सम एक्शंस होंगी, फिर उसके बाद कुछ निगेटिव फीडबैक होगा। देन टेस्टोस्टेरॉन है यहाँ पर, एक तरीके से एनाबॉलिक स्टेरॉइड हार्मोन है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि बढ़ाता है, इंक्रीज, और दैट इज द स्टेरॉइड डोपिंग, दैट इज द मिस यूज, यानी कि लिया जाता है, मिस यूज किया जाता है, दैट इज द स्टेरॉइड डोपिंग। क्लियर है, उससे थोड़ी ताकत बढ़ती है। देन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरॉन के कुछ फंक्शन से मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर डेवलपमेंट। ओके, ज्यादा हो गया तो ठीक है। देन मेल अग्रेसिव बिहेवियर ड्यू टू दैट इज द टेस्टोस्टेरॉन की वजह से, हेल्प इन दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशंस, हेयर ग्रोथ होंगी, रेगुलेट एंड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन एंड फंक्शन the male, यानी कि डेवलपमेंट एंड also मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल। देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि इनका भी डेवलपमेंट, दैट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, समाइनल वेसिकल एंड यूरेथ्रा। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली गोनाड्स, दैट इज कॉल्ड एज द टेस्टिस। Okay, now about the causes of this testosterone, that is the high secretion, that is the excessive secretion of the testosterone, that means particularly excessive secretion. Abhi now excessive secretion, that is the excessive secretion of testosterone for a first effect that is called as the acne. Clear है, some acne on face. Okay, यानी कि इसके secretion से ये सब कुछ होता है, that is the acne. Also low sperm count, that is very important, that is the low sperm count, यानी कि एक तरीके से स्पर्म ज़्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि ये गिव टू फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक टू LH को देगा। क्लियर है। ऑल्सो इसमें समटाइम्स दैट इज द हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज द हाई BP, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल्सो इंक्रीज, दैट इज द इंक्रीज RBC सिंथेसिस, दैट्स मीन्स आरबीसी का क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा सब कुछ चीजें। क्लियर है। ऑल्सो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड विल बी इंक्रीजेस, ऑल्सो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि विस्कोसिटी भी क्या होंगी, ब्लड की बढ़ेगी। देन फ्लो रेट जो भी रहेगा वो लो हो जाएगा इसके अंदर। ऑल्सो मोर एफर्ट, दैट इज द मोर एफर्ट बाय हार्ट मसल टू पंप ब्लड। ऑल्सो दैट इज द मोर एफर्ट, दैट इज द मोर एफर्ट ऑफ हार्ट मसल टू पंप ब्लड, यानी कि ब्लड पंप करने के लिए मोर एफर्ट लगेगा हार्ट मसल का टू पंप ब्लड। ऑल्सो BP क्या करेगा, दैट इज द BP, देयर इज द इंक्रीज, तो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ेगा। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इट इज द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन कॉजेज दिस फैक्टर। Okay, now about the next, that is the ovary. It is also gonad origin, also that is the mesodermal in origin. Now hypothalamus, you know about the hypothalamus secrete the gonadotropic releasing hormone, okay, or anterior pituitary, they stimulate and particularly secrete FSH and LH, that is the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. तो that means FSH करेगा, FSH जब एक्ट होगा ग्राफाइन फॉलिकल और ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट। क्लियर है। जैसे ही वो हो गया तो एस्ट्रोजन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। एस्ट्रोजन इट इज द फीमेल सेक्स हार्मोन, ओके, ग्राफाइन फॉलिकल के थ्रू। देन ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ओके, यानी कि एक तरीके से डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसके थ्रू होगा, तो दैट इज द एस्ट्रोजन। देन कार्पस लुटियम फॉर्म, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल में कार्पस लुटियम और वहां से oocyte बाहर निकलेगा, दैट इज द सेकेंडरी oocyte बॉडी जो होती है वो बाहर निकलेंगी। रप्चर ऑफ द ग्राफाइन फॉलिकल और रप्चर होगा वहां पर। क्लियर है। रप्चर मैच्योर जो भी फॉलिकल्स रहेंगे, इसको पहले मैच्योर किया गया, जो भी फॉलिकल्स रप्चर रहेंगे वहां से बाहर निकलेगा और वहां पर निकलेगा, दैट इज द कार्पस लुटियम, और कार्पस लुटियम फॉर्म करेगा, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन द pregnancy. Endometrium muscle of uterus, you know the endo maintaining the also called as the maintenance
प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेगनेंसी हार्मोन ऑल्सो, एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी. नाउ मेंटेन ऑल्सो, इसमें एक बात और याद रखिएगा कि मेंटेन एंडोमेट्रियम मसल ऑफ द यूटेरस. तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली ओवेरी. Okay, now that is the hormones of the kidney. Okay, now next about the kidney. Kidney particularly secreted by two hormones, that is very important. Two hormones secreted by the kidney, that is the first renin, that is the renin, and erythropoietin. Very important. Erythropoietin and that is the erythropoietin and that is the renin, two hormones secreted by the kidney. Also this is called as the EPO. Renin particularly secreted by the juxtaglomerular cell, that is very important, also called as the JG cell. Okay, and I'll write here, that is also secreted by the very important, juxtaglomerular cell and also called as the JG cell. यानी कि रेनिन को कौन सिक्रेट कर रहा है, तो दैट इज द juxtaglomerular cell, renin. Okay, now maintain particularly what is the function of renin. Renin, it is a very important hormone of the kidney, that means maintain electrolyte balance in the body. Maintain, that is the maintain electrolyte balance in the body. यानी एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम कौन कर रही है, दैट इज द किडनी. नाउ stimulate erythropoietin, it is the stimulate the synthesis of RBC, that is very important. Stimulates the synthesis, that is the stimulate the synthesis of RBC in bone marrow. Stimulate the RBC synthesis in stimulate the synthesis of RBC in that is the bone marrow. So this is the function about the erythropoietin and renin. Now about the hormones of GIT, that is the gastrointestinal tract. Okay, now GIT, it is called as the gastrointestinal gland. Okay, now gastrointestinal tract, this is called as the gastrointestinal tract. Now first hormone, that is called as the gastrin, secreted by mucosa of stomach, very important. Secretion of mucus of the stomach, a lot of mucus present in the stomach. Okay, stimulate the gastric juice secretion, यानी कि जो भी gastric juice रहेगा, क्लियर है, उसका क्या होगा वहां पर, दैट इज द स्टिमुलेशन, यानी कि वो सीक्रेट हो जाएगा. देन कोलेसाइटोकाइनिन, दैट इज द CCK, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कोलेसाइटोकाइनिन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द CCK, secreted by duodenal mucosa also. Stimulate the gallbladder, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन करेगा गॉल ब्लेडर और स्टिमुलेट इन द गॉल ब्लेडर टू रिलीज bile juice and pancreatic juice, okay, in duodenum. Then secretin, it is the first hormone discovered by, that is the starlin, clear है, first hormone discovered, secreted by duodenal mucosa, that is the duodenal also, that is the duodenum. You know the duodenum is the small intestine part. Okay, jejunum होता है, इलियम होता है, and duodenum होता है. Okay, तो duodenum, it is the first part and that is the U-shaped structure. Okay, and secreted by duodenal mucosa, stimulate the pancreas to release bicarbonate so that intestinal lumen become alkaline. Okay, there are present a lot of means particularly some bicarbonate mix with the जो भी intestinal juice है और जो lumen रहेगा intestine का उसको क्या करेगा, alkaline. तो that is very important about the secretin. Now fourth also, that is the gastric inhibitory peptide. Gastric inhibitory peptide secreted by duodenal mucosa also.
इनिबिट द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, यानी कि इनिबिट करेगा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। तो दिस इज ऑल द हार्मोन्स ऑफ द GIT, दैट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।